जय माँ कुलदेवी। क्या आपके घर में अनजानी अशांति है? बार बार बीमारियां, झगड़े, दरिद्रता या बिना कारण जीवन में रुकावटें आ रही हैं? ये संकेत हो सकते हैं कुलदोष, पितृदोष या ग्रह वास्तु दोष के। और अमावस्या का दिन इन सभी दोषों के निवारण के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आज हम सुनने जा रहे हैं कुल देवी को समर्पित एक दिव्य स्तोत्र, जो न केवल कुल दोष को हरता है, बल्कि पितृपीड़ा और गृह बाधा को भी शांत करता है। श्रद्धा और ध्यान से इस कुल दोष निवारण स्तोत्र को अमावस्या पर जरूर सुनें। यह पाठ आपकी पीढ़ियों का कल्याण कर सकता है। श्री अमावस्या कुलदोष निवारण स्तोत्रम्। चंडिके अम्बे जगदम्बे कुलदोष हरिणी शुभे, अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत्। यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोष समन्वितः, जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुख शांति लभे सह। पितृदोषात् बाधितो यो ग्रह शांति वांछति च, तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवम्। वास्तुदोष प्रभावेण क्लेशं यो नु भवेत् गृह, शरणं याच चण्डिकामा निर्विघ्नं तस्य सर्वदा। नित्यस्तोत्रं पठेद् भक्त्या चण्डिके त्वां नमाम्यहं। कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी, दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च। स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः, मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः। जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं। चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च, गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं। वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम्, अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते। अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं, कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति। चण्डिके अम्बे जगदम्बे कुलदोषहरिणी शुभे, अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत्। यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोष समन्वितः, जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुख शांति लभे सह। पितृदोषात् बाधितो यो ग्रह शांति वांछति च, तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवम्। वास्तुदोष प्रभावेण क्लेशं यो नु भवेत् गृह, शरणं याच चण्डिकामा निर्विघ्नं तस्य सर्वदा। नित्यस्तोत्रं पठेद् भक्त्या चण्डिके त्वां नमाम्यहं। कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी, दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च। स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः, मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः। जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं। चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च, गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं। वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम्, अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते। अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं,
कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति। चण्डिके अम्बे जगदम्बे कुलदोषहरिणी शुभे। अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत्। यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोषसमन्वितः। जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुखशान्तिलभे सः। पितृदोषात् बाधितो यो ग्रहशान्ति वाञ्छति च। तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवम्। वास्तुदोषप्रभावेण क्लेशं यो नु भवेद् गृहा। शरणं याच चण्डिकामा निर्विघ्नं तस्य सर्वदा। नित्यस्तोत्रं पठेद् भक्त्या चण्डिके त्वां नमाम्यहम्। कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी। दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः। मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः। जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं। चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च। गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं। वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम्। अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते। अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं। कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति। चण्डिके अम्बे जगदम्बे कुलदोषहरिणी शुभे। अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत्। यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोषसमन्वितः। जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुखशान्तिलभे सः। पितृदोषात् बाधितो यो ग्रहशान्ति वाञ्छति च। तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवम्। वास्तुदोषप्रभावेण क्लेशं यो नु भवेद् गृहा। शरणं याच चण्डिकामा निर्विघ्नं तस्य सर्वदा। नित्यस्तोत्रं पठेद् भक्त्या चण्डिके त्वां नमाम्यहम्। कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी। दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः। मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः। जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं। चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च। गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं। वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम्। अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते। अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं। कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति। चण्डिके अम्बे जगदम्बे कुलदोषहरिणी शुभे। अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत्। यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोषसमन्वितः। जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुखशान्तिलभे सः। पितृदोषात् बाधितो यो ग्रहशान्ति वाञ्छति च। तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवम्। वास्तुदोषप्रभावेण क्लेशं यो नु भवेद् गृहा। शरणं याच चण्डिकामा निर्विघ्नं तस्य सर्वदा। नित्यस्तोत्रं पठेद् भक्त्या
चण्डिके त्वां नमाम्यहं कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम् अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति चण्डिके अम्बे जगदम्बे कुलदोषहरिणी शुभे अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत् यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोषसमन्वितः जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुखशान्तिलभे सः पितृदोषात् बाधितो यो ग्रहशान्तिवाञ्छति च तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवं वास्तुदोषप्रभावेण क्लेशं यो नु भवेद्गृह शरणं याच चण्डिकामा निर्विघ्नं तस्य सर्वदा नित्यस्तोत्रं पठेद्भक्त्या चण्डिके त्वां नमाम्यहं कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम् अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति चण्डिके अम्बे जगदम्बे कुलदोषहरिणी शुभे अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत् यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोषसमन्वितः जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुखशान्तिलभे सः पितृदोषात् बाधितो यो ग्रहशान्तिवाञ्छति च तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवं वास्तुदोषप्रभावेण क्लेशं यो नु भवेद्गृह शरणं याच चण्डिकामा निर्विघ्नं तस्य सर्वदा नित्यस्तोत्रं पठेद्भक्त्या चण्डिके त्वां नमाम्यहं कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम् अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते
अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति। चण्डिके अम्बे जगदम्बे कुलदोषहरिणी शुभे अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत्। यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोषसमन्वितः जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुखशान्तिलभे सः। पितृदोषात् बाधितो यो ग्रहशान्ति वाञ्छति च तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवम्। वास्तुदोषप्रभावेण क्लेशं यो नु भवेद् गृह शरणं याच चण्डिकामा निर्विघ्नं तस्य सर्वदा। नित्यस्तोत्रं पठेद् भक्त्या चण्डिके त्वां नमाम्यहं। कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी। दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः। मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं। चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं। वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम् अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते। अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति। चण्डिके अम्बे जगदम्बे कुलदोषहरिणी शुभे अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत्। यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोषसमन्वितः जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुखशान्तिलभे सः। पितृदोषात् बाधितो यो ग्रहशान्ति वाञ्छति च तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवम्। वास्तुदोषप्रभावेण क्लेशं यो नु भवेद् गृह शरणं याच चण्डिकामा निर्विघ्नं तस्य सर्वदा। नित्यस्तोत्रं पठेद् भक्त्या चण्डिके त्वां नमाम्यहं। कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी। दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः। मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं। चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं। वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम् अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते। अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति। चण्डिके अम्बे जगदम्बे कुलदोषहरिणी शुभे अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत्। यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोषसमन्वितः जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुखशान्तिलभे सः। पितृदोषात् बाधितो यो ग्रहशान्ति वाञ्छति च तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवम्। वास्तुदोषप्रभावेण क्लेशं यो नु भवेद् गृह शरणं याच चण्डिकामा
निर्विघ्नं तस्य सर्वदा नित्यस्तोत्रं पठेद्भक्त्या चण्डिके त्वां नमाम्यहं कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम् अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति चण्डिके अम्बे जगदम्बे कुलदोषहरिणी शुभे अमावास्यां श्रुतं तव दुःखदोषं नाशयेत् यस्य गेहे विवादोऽस्ति रोगदोषसमन्वितः जपं कुर्वन्ति मातस्ते सुखशान्तिलभे सः पितृदोषात् बाधितो यो ग्रहशान्तिवाञ्छति च तव स्तोत्रं पठन् भक्त्या शुद्धिं लभते ध्रुवं वास्तुदोषप्रभावेण क्लेशं योऽनुभवेत् गृह शरणं याच चण्डिकामा निर्विघ्नं तस्य सर्वदा नित्यस्तोत्रं पठेद्भक्त्या चण्डिके त्वां नमाम्यहं कुलवृत्तेर्नाशकं त्वं मातः शुद्धिप्रदायिनी दारिद्र्यं च व्याधयो वा सन्तानदोष एव च स्तोत्रस्य प्रभावेण नश्यन्ते तु हि मातरः मङ्गलं कुलदेव्याः स्यात् अमावास्यां विशेषतः जपं कुर्वन्ति ते नित्यं ते लभन्ते मनोरथं चण्डिके त्वं नमस्तुभ्यं कुलसंरक्षणाय च गृहदोषे क्लेशे च तव नाम शमनं परं वेदविद्या तपः पुण्यं यज्ञदानादिकं शुभम् अस्मिन् स्तोत्रे निवेशं हि सर्वपापः विमुच्यते अमावास्यां विशेषेण चण्डिके स्तोत्रमोत्तमं कुलशुद्धिः पितृशान्ति गृहशान्ति च सिद्ध्यति श्री अमावास्या कुलदोषनिवारणस्तोत्रं श्रीकुलदेव्यार्पणमस्तु।